त्यांची गरज भासते तेव्हा त्यांना बोलावलं जातो. त्यांना बहुतेक उभा राहण्याची सुद्धा जागा भेटत नाही, त्यांना जेवणची सुद्धा अडचण होते. अशी परिस्थितीमध्ये अशी खट्टर सेवा असे आमचे एसआरपीएफचे जवान देतात आणि त्यांच्याकडे दररोज तशी पाळी येते. तर ते त्यांची थोडीफार ड्रेस वेगळी असते, त्यांची टोपी जी आहे निळ्या रंगाची फेल्ट कॅप असते. आपल्याला कधी असे एसआरपीएफचे ते लोक जर दिसले तर मला आपल्याला एकच आव्हान आहे, काही नसेल तर त्यांच्याशी जरा आपण जर हात मिळवलं आणि त्यांना जर विचारलं की आपली कशी काय ड्युटी चाललेली आहे, तर मी आभारी राहणार. कारण काय त्यांच्याकडे काहीच नाही, त्यांच्याकडे पोलीस स्टेशन नाही, त्यांना बसण्याची बहुतेक जागा नाही. बाकडा भेटतो, ते बाकडावर बसून राहतात. मला मुंबईचे नागरिकांशी त्यांच्यासाठी इथे 12 ते 12 कंपन्या इथे आहे. एक कंपनीमध्ये 300 लोक असतात. असे लोकांना कौतुक करणं आमच्या सर्वांचं कर्तव्य आहे. ते आपल्या संरक्षणासाठी आहेत. जर एकही नागरिकने तसा केला तर मी स्वतःहून आपला आभारी राहील. ह्यांची वेशभूषा फक्त कॅप जर आपण बघितली तर ती फेल्ट कॅप असते. इतरांची आता नवीन कॅप जे आहे ते आपल्याला माहितीच आहे, तशी नसते. आणि ते एसआरपीचे लोक आहेत, त्यांना आपण त्यांचं कौतुक करणं, त्यांचा उत्साह वर्धन करणं फार गरजेचं आहे. ते फारच खट्टर सेवा दररोज त्यांची ड्युटी असते. 24 तास गार्ड ड्युटी, दिवसभर त्या मोठी गाडी जी येऊन असते, कधी कधी औरंगाबादवरून, कधी हिंगोलीवरून. तर त्यांच्या कौतुक करणं मुंबईच्या लोकांसाठी गरजेचं आहे. कारण का त्यांच्यामुळे आपण सुरक्षित आहात. इतर लोक सगळं करत असतात, पण हे स्ट्रायकिंग फोर्स आहे. मग त्यांचं थोडं कौतुक आपण केलं तर मी आभारी राहील. कमीत कमी काही नाही तर त्यांच्याशी बोलून त्यांच्याशी हात मिळवणी जर केली तर आपल्याला काही कमी होत नाही. त्या जवानाच्या मनात तरी आपल्या बाबतीत सुद्धा चांगला वाटेल की हे बघा मुंबईचे लोक कसे आहेत, आमच्याशी कमीत कमी एवढे चांगल्या रीतीने बोलतात तरी आहेत. कॉन्स्टेबल लोकांच्या आमच्या जे मुंबई पोलीसचे आहे त्यांच्या बाबतीत थोडीफार माहिती मला होती आणि त्या माहितीप्रमाणे मी सांगू इच्छितो की आपण काही काळजी करू नका. आपण जर जिल्हा बदली विचारली असेल, आपल्याला मुंबईच्या बाहेर जायचे असेल, वी विल डू इट. पण जोपर्यंत आहात आपल्या नागरिकांच्या सगळ्यांबरोबर सौहार्दपूर्ण वातावरण ठेवा. कुठल्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडत असेल, मी आपल्याला 3च टार्गेट दिलेले आहे. आपले महाराष्ट्र पोलीस दिले होते, त्यामध्ये आपण सामील आहात की आपण एक दिवस एक माणसाला मदत, ज्याला आपण मदत करू शकत असाल त्याला मदत करा. पैशाची मदत मी करण्याच्या सांगत नाही. जर तो तुमच्या पोलीस स्टेशनला आला असेल, कमीत कमी एवढं तरी सांगा तुम्ही बाकड्यावर चांगल्या रीतीने साहेब बसा. एक जर तुम्ही पाणी आणून दिलं, जर ज्येष्ठ नागरिक असेल तर आपलं काही कमी होत नाही, त्याला चांगलं वाटतं. एवढंच मी आपल्याकडून माझी अपेक्षा आहे. आणि दुसरं मी आपल्याला सांगितलं आहे की जर आपल्याला काही अनुचित प्रकार घडत असेल, आपल्या समोर घडत असेल, आता माझ्याकडे एक कॉन्स्टेबल येऊन गेले, मी त्यांना हेच सांगितलं की काही अनुचित प्रकार घडत असेल आपल्या वरिष्ठांना सांगा, त्यांनी त्याच्यावर योग्य कारवाई करावी. आणि तिसरा, आमच्याकडे सायबर क्राईम फार वाढलेले आहेत. तर मी आवाहन केलेलं आहे की आपण अर्धा तास तरी सायबर क्राईमच्या बाबतीत दुसऱ्यांना विचारून किंवा स्वतः आपल्याला जर अभ्यास करता आला तर तसे आपण अभ्यास करा. एवढा मला आपल्या अंमलदारांच्या बाबतीत सांगायचं होतं. आता सगळे अंमलदार जे आहे ते PSI होतील, त्यांचं भाग्य आहे. आणि आम्ही आपल्याला हमी देतो की लवकरात लवकर आम्ही करून देणार आणि ते होईल. एवढा मला मराठीमध्ये सांगायचं होतं. थोडा वेळ 20 मिनिट झाले. आता मी हिंदीमध्ये जे काही मी सांगितलं आहे ते सांगू इच्छितो. मुंबई के सभी नागरिक और मेरे सर्व मुंबई पुलिस के सब अधिकारी, अमलदार और कर्मचारी, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है. मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि यह मौका मिलेगा, लेकिन यह मौका है. तो मैं आपको सबको बताना चाहता हूं, आपने देखे होंगे पहले भी कमिश्नर्स आए, लेकिन मैं चाहूंगा आपसे, आप नागरिकों से सीधा संपर्क रखने. कोई कहता है कि क्यों भाई आप सीधा क्यों संपर्क, अरे भाई कमिश्नर पुलिस का हूं तो अगर मुझे सिटीजन से बात ही नहीं करते आएगा तो फिर फायदा क्या बैठने का. तो इसलिए मैंने आपको नंबर दिया है, आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं
बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन करने की कोशिश की। मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ, फ़ोन करके देखिए, ऐसा है कि 1000 फ़ोन मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आपके 1000 मैसेज मैं पढ़ सकता हूँ। तो आप व्हाट्सएप भेजें, मैं उसका जरूर उत्तर देने की कोशिश करूंगा। बहुत से लोगों का दिया भी है। मैं 20 साल पहले मुंबई में था, अब की परिस्थिति चेंज हो गई है, इसलिए मुझे आपसे संपर्क करना बहुत जरूरी है। तो आपने मेरे को समर्थन दिया, एक हफ्ते में मैंने कुछ निर्णय भी आपकी वजह से ले सका, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मुझे जो नहीं पता था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुंबई में बहुत से सीनियर सिटीजन, जो ज्येष्ठ नागरिक हैं, उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनके लिए वो अकेले रहते हैं, उनके बच्चे शायद बाहर हैं, उनको किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का, उनको किसी भी तरह का संरक्षण मिलता नहीं है, या उसको जब उनको कभी अड़चन आती है तो हम लोग उनको इस तरह का कोई समर्थन या संरक्षण दे नहीं पाते। इसके लिए मैंने आज ही अपने सारे पुलिस स्टेशन को कहा है कि आप सारे, आपके एरिया में जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी आप यादी बनाइए और उनके घर में एक नोटबुक रखिए। हमारे ऑफिसर वहां जाके उस नोटबुक को साइन करें और हम उसको सुपरवाइज करेंगे। इससे जो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमको इमीडिएटली पता चलेगा, और सीनियर सिटीजन्स को भी हमारे नंबर पता होंगे, उनका बीट ऑफिसर कौन है, बीट कांस्टेबल कौन है, सीनियर पीआई कौन है, इस बात से वो अनभिज्ञ नहीं रहेंगे। तो ये मेरा पहला मैंने एक निर्णय लिया है। दूसरा निर्णय हमने लिया है कि भाई बम्बई में मुझे पता नहीं था, पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन जरूरी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं है कि हमारे घर के बाजू में दिन में, जिस वक्त आज संडे है, आज संडे के दिन भी हमारे मुंबई के सिटीजन अगर घर में रह नहीं सके और दिन भर उनके घर के बाहर आप जो कंस्ट्रक्शन करते रहेंगे, आपको जो समय दिया गया है आप उस समय में रहिए, लेकिन उस समय के अलावा रात को आप जो कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमने अपने हमने अधिकारियों को कहा है, हम एक्शन लेंगे। और हमें ऐसा लगता है कि जिन नागरिकों को ऐसी अड़चन है वो हमसे जरूर संपर्क करें, और हमसे जितना भी हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा एक बहुत आश्चर्य की बात है जो मुझे समझ में आई कि यहाँ पे बहुत से जो लोग बाहर विदेश में चले गए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं। उन प्रॉपर्टीज को हथियाने के लिए बहुत से लोग बहुत कार्यान्वित है। मतलब जगह है गांव देवी के कई लोगों ने मेरे को फोन किया। आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, जो अमेरिका में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, आप हमको संपर्क करें। इस तरह की चीजें, ये पुलिस खाता इसका कोई समर्थन नहीं करता, और हमको इस चीज का बड़ा दुख है कि ऐसा हो भी रहा है। तो हम आपको पूरी तरह से मदद करेंगे, और आप मेरे को इस बारे में मेरे से आप संपर्क में रह सकते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है साइबर क्राइम का। उस साइबर क्राइम के बारे में मैं आपको यही कह सकता हूं कि आपको एजुकेट होना बहुत जरूरी है। किसी को भी आप फोन नंबर मत दें, फोन पे आप किसी को अपना कार्ड का नंबर, बैंक का नंबर, ईमेल को बिना बात का क्लिक मत करें, और अपना पिन, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना आधार कार्ड, ये सब मत दें। अल्टीमेटली कोई भी बैंक ही पूछता नहीं, कोई भी कार्ड कंपनी पूछती नहीं, ये सिर्फ गुनहगार ही पूछते हैं। तो आप सतर्क रहें, किसी को ये नंबर ना दें, और अगर ऐसे कोई मैसेज आते हैं तो हमको बताइए, हम उनकी कार्रवाई करें। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और ये बनने वाला है। इसमें आप लोग हमारे साथ जुड़े और हमको बताते रहे, हमसे जितना भी बन सकेगा हम आपके लिए कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही जो एक प्रश्न है वो है कि हमारे नागरिक जब जाते हैं पुलिस स्टेशन में तो शायद बड़े से लोग कंप्लेंट करते हैं कि साहब हमारी कंप्लेंट नहीं ली जाती है। मैं अपने अधिकारियों को, अपने अमलदारों को, अपने कर्मचारियों को ये कहना चाहूँगा इस माध्यम से कि देखिए साहब, ये काम हमको दी गई है, हमको सैलरी मिलती है, और आज 7वें पे कमीशन में हमारी काफ़ी अच्छी सैलरी है। एक कांस्टेबल्स को मेरे ख्याल से 50-60 हज़ार रुपये, ठीक है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी पहले के हिसाब से तो बहुत थे। और हमने भी आप लोगों के लिए कोशिश की है कि आप इंस्पेक्टर बन जाएं। तो मैं हर एक से यही कहना चाहता हूँ कि भाई हमारा मेन काम क्राइम इन्वेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम है। लॉ एंड ऑर्डर तो चलिए ठीक है, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर आज होता है, और जिस समय होता है तो हमारी बहुत बड़ी फोर्स है, और मुंबई भगवान की दया से इतना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर अभी तक तो नहीं था। एक समय था 92-93 में जब हुआ था, लेकिन हम सक्षम हैं। लेकिन एक क्राइम के बारे में जो अगर आप रजिस्टर ही नहीं करेंगे तो उस गरीब आदमी का जिसका फोन चला गया, जिस घर की जो हमारी बहनें हैं, जो माताएं हैं, जिनकी चेन स्नैचिंग हो रही है, जब आप रजिस्टर ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा।
तो ये प्रकार नहीं होना चाहिए। किसी भी सिटीजन के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ तो मैं चाहूंगा कि वो मेरे से डायरेक्टली संपर्क करें, और जहां तक संभव है हम करेंगे। हम किसी को पनिश नहीं करना चाहते, लेकिन मैं यही जना बताना चाहता हूं कि साहब बैठे हम किस लिए, हम पुलिस स्टेशन में है किस लिए? गुनाह का इन्वेस्टिगेशन करना और रजिस्ट्रेशन करना तो हमारा रोज का काम है, तो ये तो आपको करना ही होगा और आप करेंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है और आशा है। ट्रैफिक का प्रश्न बहुत बड़ा है। मैं तो खुद ही मुंबई में रहने वाला हूँ, ट्रैफिक के प्रश्न में से जुड़ा हुआ हूँ। मैं मुंबई में, साउथ मुंबई में नहीं रहता हूँ, आज मैं अंधेरी में रहता हूँ। आने जाने में इतनी दिक्कत है। हमारे यहाँ के ट्रैफिक वाले जो हैं बहुत ही आतुर और बहुत ही स्फूर्तिपूर्वक काम करते हैं। स्फूर्तिपूर्वक मतलब बहुत बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं वो, मतलब बेचारे, उनकी वजह से आज रोड तो खाली हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ कई ऐसे भी लोग हैं कि हम अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गए, बाहर कार खड़ी थी, जब तक मैं बच्चे को लेने गया तब तक गाड़ी उठा के चल दी। अरे भाई, मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है, कम से कम 2 मिनट रुक जाइए, पूछ लीजिए क्यों गए थे, और अगर वो 4-5 घंटे नहीं आता है तब आप अपना दुनिया भर का टोइंग करिए। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। टोइंग मैंने रोकी इसीलिए है कि इसका कुछ न कुछ हल होना चाहिए। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। नंबर साहब मिट जाता है रोड पर, उस जमाने में तो नंबर लिखे जाते थे। हम कहाँ ढूंढे आपको, कहाँ पकड़े, किधर गया, किसको समझे। तो पार्किंग की जगह नहीं है, पार्किंग का बोर्ड नहीं है, पार्किंग के रेट पता नहीं है। ये सब चीजें जब तक नहीं होती, जब तक ये बेसिक सुविधाएं नहीं होती। बहुत से लोगों ने कहा नहीं साहब टोइंग बहुत अच्छी चीज है, बहुत से ने कहा नहीं अच्छी है। मैं मानता हूं कि अच्छी और बुरी की बात ही नहीं है, लेकिन इसको करने के लिए जो बेसिक चीजें हैं वो तो होनी चाहिए। हमें पता तो होना चाहिए कि ये नो पार्किंग है, कहीं तो लिखा होना चाहिए कि इतना पैसा देना है, तब तो हम नो पार्किंग की बात करें, तब तो हम टोइंग की बात करें, तब तो हम अपने नागरिकों के खिलाफ, जिसमें मैं भी शामिल हूं, आप कार्रवाई करें। लेकिन बिना बात के लिए और इस तरह से फिर हमें थोड़ा समय चाहिए। इसीलिए 1 हफ्ते का समय मैंने मांगा है और 1 हफ्ते समय में हमें कुछ ना कुछ करते आएगा। मैं बीएमसी से भी इसके बारे में बात करूंगा। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे जो महाराष्ट्र की जो स्ट्राइकिंग फोर्स है, जो लॉ एंड ऑर्डर में जिसका हम उपयोग करते हैं, आज उनका जन्मदिन है और आज उनका स्थापना दिवस है 6 मार्च। मैं उन सभी लोगों को अभिनंदन करता हूं। उन लोगों की ड्यूटी आपको पता नहीं है। आप समझते हैं वो भी लोकल पुलिस वाले हैं, वो लोकल पुलिस वाले नहीं है। वो यहाँ की पुलिस वालों की कैप आपने देखी है, गोल गोल, वो जो मतलब गोल्फ की कैप है वो लगा के चलते हैं। वो उनकी फेल्ट कैप है, मतलब जैसे आर्मी वाले पहनते हैं, फेल्ट कैप है, नीली कैप है। वो बेचारों को न तो यहाँ पुलिस स्टेशन है, न ही उनको बैठने की जगह है। जब कभी लॉ एंड ऑर्डर आता है, जब कभी डंडा चलाने की बात आती है, तो यही लोग बेचारे डंडा चलाते हैं। लेकिन आज उनको बैठने की जगह नहीं मिलती। आज उनको खाने की, तो खाना तो चलिए हम लोग उनकी मेस लेके आते हैं, लेकिन आते आते कहाँ से बनता है और कब आता है आप ही जाने। गाड़ियों में बैठते हैं, गाड़ियों में सोते हैं। ऐसे लोगों को मुझे आज बॉम्बे के नागरिकों को मैं कहना चाहूंगा, हो सके जहां कहीं आपको SRPF का जवान दिखे तो आप कम से कम हाथ ही मिला लीजिए, पूछ ही लीजिए कि कहां से आए हैं। देखिए वो बेचारा हिंगोली से आया है, वो नागपुर से आया है, आपकी सेवा के लिए आया है। इतनी छोटी सी गुजारिश है, उसको बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी हमारे पुलिस वाले से बात करके अच्छा लगेगा। हम और कुछ नहीं मांग रहे हैं, एक रिकग्निशन चाहते हैं, एक ऐसी फोर्स का जो हमें समय समय पर, जब भी हमें दिक्कत आई है, मैंने तो जब मैं धारावी में था, SRP की वजह से हम कंट्रोल कर सके। मैं नांदेड़ में था, वहां भी SRP की वजह से हम दंगा कंट्रोल कर सके। आज मुंबई जो सुरक्षित है, उनकी 12 कंपनियां हैं, एक कंपनी 300 लोग होते हैं। इतने लोगों को जिनका रहने की जगह नहीं, बैठने की जगह नहीं, ऐसे लोगों का समर्थन करना, ऐसे लोगों का अभिनंदन करना आपकी, हमारी सबकी जवाबदारी है। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कांस्टेबल लोगों के प्रश्न तो हमारे सामने है ही हैं, छुट्टियां नहीं मिलती हैं, मेडिकल बिल नहीं सैंक्शन हो रहे हैं, वो तो मैं देख रहा हूँ, उनकी बदलियां नहीं होती हैं, वो भी मैं देख रहा हूँ, सबकी होगी, कोई किसी प्रकार की आपको चिंता की जरूरत नहीं है। प्रमोशंस के बारे में तो हमने कर ही दिया है कि आपको 30 साल के अंदर आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे,
लेकिन ये सब करते हुए हमको क्या आपसे, हमारे कांस्टेबल लोगों से, हमारे मुंबई पुलिस के जो हमारे अमलदार हैं, उनसे एक ही गुजारिश है, हमारे नागरिकों के लिए, जिनके लिए आपने यूनिफॉर्म पहनी है, जिनके लिए आप रोड पे खड़े हैं, जिनके लिए आप पुलिस स्टेशन में तैनात हैं, आप उनके साथ एक ऐसा सलूक करें। मेरा समय तो कम होगा, मानता हूं, लेकिन आपका समय मेरे से ज्यादा है। ये नाता, ये रिश्ता आपको बनाना है। मैं तो एक माध्यम हूं। मैं यही चाहता हूं कि ये रिश्ता जो हमारे सिटीजन के साथ है, आप इसको बनाए रखें। उनके साथ एक ऐसा आप उनको जैसा सलूक करें कि वो भी ऐसा कहे कि नहीं, बॉम्बे पुलिस के बारे में जो हमने सुना था, जो हमने पढ़ा था, वो सही है। यही मैं आप लोगों को बताना चाहता था। अब मैं अंग्रेजी में बोलना चाहूँगा। मेरा समय तो खत्म हुआ, लेकिन अब अंग्रेजी का समय, अंग्रेजों का भी समय खत्म ही हो चुका है। हिंदुस्तान में तो नहीं है, तो चलिए अंग्रेजी में अब सुनते हैं उनके लिए जो अंग्रेजी जानते हैं। माय डियर मुंबईकर्स, इट्स अ ग्रेट ऑनर for me particularly. I never imagined that I'll be your commissioner. There are some people who are talking about various things. Those people who are in power, who are wherever, they know that I was not hankering for this. I was not looking for this. I never dreamt of this. I never dreamt to be a DG. I never dreamt to be a CP. If I became today, I will try to live up to I believe that I have some small little reputation which I made in Bombay City, and I like to live up to that. So for that I want to address you. For that I want to talk to you. For that I want to build this communication and this conversation. As I joined in, I have done 20 years back. I have seen Bombay 20 years back. Bombay is different. So I reached out to you. Some people said, "Arey, this CP is detailing his number, personal number." What is there? It's a Airtel number. It's not my personal number. Everybody knows my number. Some people may tap it, some people may try to hack it. So be it. I don't care. As long as I am using that number to contact with you, and I am telling you, I am overwhelmed. Bombay has responded. Bombay citizens have lived up to whatever I knew. I will relate a small experience which I didn't relate in Hindi and Marathi. In 1992, this city really rose up. We had nothing at that time. Today the Bombay police has many equipments. Everything was made available to us. Forget about food is the minimum, the last thing that the citizens provided. Every kind of facility. In some other occasion, I will relate that as well. So, with citizens I have a lot of support. I had a lot of support. And I just trying to build that support again. And that's why the mail was sent. That's why my numbers were given. And you have really made me feel very good, made me feel belong to your city, made me feel as if I'm really in the right place. So going ahead, certain things I didn't know, how it is affecting our senior citizens who are staying 1 or 2 people in the house, nobody to look after, they are in dire need. So for them, we just laid out a program. We just said that there should be a diary in every senior citizen's house, which our beat constables, our beat PSIs, our beat PIs, inspectors will be visiting, will be signing, so you know who the people are. In case of any distress, in case of any stress or any need, we will be there. So for senior citizens, this is our first initiative which we are trying to do. You will see it from tomorrow onwards. Most of my senior citizens will see it happening. If you don't see it, you have my number. You have absolute confidence that if you WhatsApp me, I will reach out to you. I'll reach out maybe a day later, but sometimes I do respond immediately. So if I'm sitting idle, today I'm sitting idle, I will respond. I mean, you talk to me. But if you call me, sometimes I may not be able to. But in a distress call, you could and you would, and I think you should. There are issues with noise pollution which I was not aware. A lot of construction activity. Thanks to the builders, we are living in our houses. But I also want to tell them that while your business is important to us, at the same time, it is important for the citizens
to at least have a Sunday free of noise, at least have a night free of noise. You have certain rules, please follow them. You have certain timings, please follow them. Don't give us a chance. Don't give us a chance. And let the citizens, you are also a citizen of Mumbai. You will never like that somebody should be hammering close by, and so I will not be able to talk to even my father and mother in the house. So that's a request. I'm sure all the builders, all the contractors are listening to this, and certainly our policemen certainly are listening. They have been instructed, and we will be doing what we should do. So, related to this is a grabbing of properties. My God, it's such a serious offense. I never knew. People in Canada rang me up. People in America called me. Sir, if you can somehow look at a particular place, say Gandhi, where our properties are being, we have no way to go to them. We have no wherewithal. We are staying there. To them, I want to assure, and I want to also tell my officers, look, if this is happening, and if you are aware, this is not tolerable. We cannot tolerate this. No police officer should ever tolerate somebody's property being grabbed in front of him. And what when they are naming the city, when they are naming a place. So, yes, we will be with you, we will be for you, and you will soon understand that we really meant it. Problem of cybercrime is all over. They call you, they get your numbers, they get your card numbers. We sometimes do not know. We give them the card numbers, Aadhaar cards, PIN numbers, and then they commit the fraud. You will be amazed to know the number of complaints which come. Many are registered, some are not. But how did it happen? It happened because you clicked the wrong link. It happened because you gave your phone number or you gave your PIN number on phone, you gave your card number, you gave your date of birth. I am telling you, not on the behalf of banks, not on the behalf of the card companies, but as an aware person. For your information, I was a computer security person for quite a while. I worked in the industry. No bank calls for these numbers. No card companies call for these numbers. You get SMS, your card is getting blocked. You call me with all your KYC details. No bank does that. No card company does that. Please do not respond to these. Otherwise, you will lose your money. And there are only gangsters who are on the other side who are calling you. They're not the bank people. They're not the card companies. So please take care. Along with this is the issue of traffic. The traffic was a major issue. I have a personal experience. My cars have been towed away. So somebody said, why did you talk about towing? I said, boss, I know what towing means to a common citizen. My car so many times in front of the Maker Towers where I used to have some association has been lifted. And then we used to really find out where the numbers are. And those numbers used to be earlier written in chalk and we could never really find out those numbers. Later on I had to really go back to my policeman and then request, and I was then somehow get it. I'm sure most of you have had the similar experience. Towing is a big thing. I talked to my son, he said in the US also they do tow. That's fine. But then they have told you where the parking is. They have told you where the no parking is. Here, are we guessing? आजू बाजू में पूछना पड़ता है. We ask somebody, can I park this car here? Can I park it that place? Is it not a no parking? Will you have a look at it? Keep a watch on my car if it will not be lifted? Where are we? If we cannot provide the basic infrastructure, if we cannot tell the citizens, this is no parking, this is the parking, this is the money, this is the charge, this is the rate. Sorry, I think we have to really go back to the drawing boards and only then come back and tell and lift or whatever. If some people say then the road will be clogged, leave it to us. We'll ensure that at least the roads don't get clogged. But this kind of thing, to my mind, is not very, very good. Finally, we as policemen wear this uniform for what? For crime investigation, for maintaining law and order. Fortunately, by God's grace, there has not been much of a law and order situation around
Sometimes it does happen, but not a very severe thing. 92, 93s were very, very serious, and later on, the Bombay attack was a serious issue. But the crime is our day-to-day thing. Crime hasn't stopped since 92, 93. It has happened in during the bomb blast. It has happened daily. Every day chains would get snatched. Every day mobile phones get missing. Every day there are thefts. I'm not saying they're rampant. Don't get me wrong. The police officer say Mr. Pandey is saying every day. No, but sometimes it does happen. So what is required? I'm only asking my policemen, please do register these cases. We are wearing this uniform. We are getting paid for this. There is no other way that we can help the citizens but by registering their complaints, which when cognizable, there should be an FIR. When non-cognizable, there should be an NC report. Please take care of this. This is my request, and I am sure the citizens will also let me know if there is something amiss in this. To my men, today is a great day. The SRPF, which many of you may not know, you probably confused with the local police, but let me tell you this, whenever the law and order happens, whenever there is an issue of law and order in the city, the people who respond first are our SRPF people. So to our citizens, let me tell you this, they don't have a police station. These guys don't have their houses in the city. They have come all the way from Solapur, all the way from Bengali, from Nagpur. They are here for your protection, for making sure that they are secure. While certainly the policemen should take care of them, my only one small request. Today, this is their biggest day. They were raised today on 6th of March. While I certainly am congratulating them, but I'm not saying only for today. It's every day their duty is difficult. Do you know that they don't have a house here? They sleep in their own buses. They don't have a place to sit down. They sit on pavements. Yes, food gets arranged for them, but by the time it reaches to them, it's also stale. My one request to the citizens. You may think that what right does this Pandey have? He has just come about 5 days back and he's making a request. Sir, I have been a citizen like you. I have worked in Bombay City in the worst of the times, 92, 93. It was with your support, it was with your effort. I don't want to take names, but it was the support of people in Bombay which made me control the riots and brought me to a stage where I got recognized to be the DG of the state. And yes, due to some unfortunate instances, today, I've been made the commissioner. People talk about agendas, people talk about various things. You will see what the agenda is. The agenda is to make you safe and secure. So to that, my request is, please do handshake, or please go up to my SRP fellows. Their caps are different. They're not the same as Bombay police caps. Please go shake their hands and ask their name. From where have you come? He will feel very good. He is here for you. And that's the recognition that we should give to a force which has risen to the occasion, which has lived up to its reputation, which is probably the best force. I would not say the entire country, or otherwise other states will talk about us, but at least among the men that we are here, they are the best. And so they need a treatment. Nothing, you will not lose by walking up to them. If you're walking and you're seeing somebody with a big vehicle, Neela vehicle, the blue vehicle, and there are people sitting next to it, they are our SRP men. If you don't recognize the cab, that's fine. But then you will see that they are not very far away from their main vehicle, because that's the place they sleep. That's the place where this is their home. They have come all the way. So please, citizens, this is my request. For the rest of it, we are taking care of our policemen. We will do. I've got certain things in mind. They wanted district postings, that's happening. They wanted certain promotions that the government has approved. So that's about it. I mean, I have exceeded my time by more than 15 minutes. I am thankful to all of you.
मी सगळ्यांचे आभारी आहोत. whoever has listened to me, ज्यांनी ज्यांनी मला ऐकलं असेल, this communication, this conversation will continue. I will be connected with you on a weekly basis onto the Facebook through these kind of contacts, and will be with you on WhatsApp, on whatever messages, whenever you want to send. Thank you very much. Thank you for listening to me. I'll be back with you next Sunday with the same kind of approach, with the same kind of thoughts, some more ideas, some more work that we've done. Thank you very much. तुम गट्टू